Hello, everyone, and very good afternoon once again. So, welcome back, guys. So, in today's class, we are going to continue our chapter equation, and today's portion is quadratic equation. Yes, today's portion is quadratic equation, और ये टॉपिक थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है एंड इसमें क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम रहेगा और एक्सरसाइजेस थोड़ी सी ज्यादा है तो आपको फटाफट से पिकअप करना रहेगा द मेन motto will be to understand all the concepts with good shortcuts tricks. Okay, so welcome everybody, and first of all, very happy new year. Yes, happy new year, guys. And let's see who all are live with us now. Sachin is there, Tambeshwari, Avni, Kanza Kaushar, Nusrat Fatima, Vidhi Patel, Ranjit, हितेश, तुबा वसीम, के.एस. अनाघा, विधि, लिपि, लक्ष्मण, अमेरा, किंजल, मनोज कुमार झा. Great. So welcome everybody and लेट्स बिगिन द टुडेज सेशन. तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आई होप आप सब लोगों ने अपने अपने रेजोल्यूशन बना लिए होंगे. तो रेजोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ऑफकोर्स न्यू ईयर के लिए, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट उसको बनाना होता है उतना ही इंपॉर्टेंट इसको कंटिन्यू रखना भी होता है. यस, तो उतना ही इंपॉर्टेंट इसको कंटिन्यू रखना भी होगा. सो आई थिंक हमें इसके बारे में भी बात करनी चाहिए, रेजोल्यूशन के बारे में, बट अभी इस प्लेटफॉर्म पे हम फिलहाल नहीं कर सकते हैं बिकॉज हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, बट अगर आप लोग चाहें तो आज शाम को कनेक्ट हो सकते हैं. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रेजोल्यूशन एंड हाउ टू स्टडी फॉर जून 2024 एग्जाम्स, ताकि हम बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सके. तो ऑफकोर्स यू कैन कनेक्ट ऑन द एप्लीकेशन स्टूडेंट्स क्लिनिक एंड आई विल बी sharing you the live link so that all of you can join and we can discuss over the resolution और कैसे हमें उसको achieve करना है. All right. Yes, I am receiving a lot of wishes from you guys. So thank you so much once again and a very happy new year. So uh, Niharika is asking, I am new. Can you please tell me how many topics have been completed? See, only chapter number one, mainly which covers law of indices, ratio proportion, logarithm is completed. Next, we have started with equations. So today we will be finishing equations. Okay. So Renuka is there, Manya, Priya, Pari, Kanan, Dipti, Faisal, Avni, then Sanatan, Roy, Paras. Okay, great. Manya is asking from where we can get this app. You can get the app from the Play Store. Just download and connect, and I will be sharing the link for tonight. Okay, so that we can score more. We can work on our resolution to achieve to great heights. All right. चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं हमारे इस टॉपिक की, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो जैसा कि हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है? वेयर maximum power where maximum power of variable is 2. जहां पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होती है 2, उसे हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो द बेसिक फॉर्मेट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. So this is the basic format. Now in this, the maximum value is 2. The maximum power is 2. तो मैक्सिमम पावर 2 होना जरूरी है. इससे नीचे कुछ भी हो दैट डजंट मेक एनी सेंस. लेकिन मैक्सिमम पावर अगर 2 है तभी हम उसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो व्हाट आर ए बी एंड सी? ए बी एंड सी आर द कांस्टेंट्स. उनका कोई भी नंबर हो सकता है. ऑल दीज आर कांस्टेंट्स, बट ए कैन नेवर बी इक्वल टू 0. बिकॉज अगर ए 0 हो गया दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा. इसलिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता. लेकिन बी एंड सी का कुछ भी वैल्यू हो सकता है. इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, एनीथिंग इज पॉसिबल. ऑलराइट, परफेक्ट. So if I take this first example, 2x square plus 3x plus 5 equal to 0. So maximum power is 2. It is a quadratic equation. Second one, x square minus x equal to 0.
So again, maximum power is 2. Therefore, it is also a quadratic equation. In third one, some values are negative. Doesn't make difference. 5x square, maximum power is 2. Again, it is a quadratic equation. तो quadratic बनने के लिए basic condition सिर्फ इतना ही है और कुछ भी नहीं है. Okay? सो निहारिका इज आस्किंग, मैं लेट हो गई रजिस्ट्रेशन में, अब मैं बाकी टॉपिक्स कैसे करूँ? ओके, सी यू कैन व्यू द टॉपिक्स फ्रॉम द आईसीआई चैनल. आपने जहाँ पे ज्वाइन किया है यूजिंग योर आईसीआई ऐप, वहाँ पे ऑलरेडी लेक्चर्स अवेलेबल है. यू कैन गो थ्रू विद दैट. उसके आप गो थ्रू करें, और उसके अलावा लाइव सेशंस को आप अटेंड कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, then you can connect on Students Clinic app. Okay. So this is for paper number 3. You can connect with me on the Student Clinic app, and I will be taking your doubts and anything on this application. Okay. So it is available easily on the Play Store. परफेक्ट. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक आप लोगों ने समझ लिया है. तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. तो अगर आपका इक्वेशन का फॉर्मेट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इफ दैट इज द फॉर्मेट. अगर ये आपका फॉर्मेट है, तो आपको सॉल्व कैसे करना है, एक्स का वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. उसको समझना यहाँ पे जरूरी है. तो उसके लिए आपको क्या करना है? तो उसके लिए दिस इज अवर फॉर्मूला. ये फॉर्मूला हमें याद होना जरूरी है. क्या फॉर्मूला है, इसको हम कैसे करेंगे? इट इज माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ये फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और रेलिवेंट है. तो चलिए डिस्कस करते हैं इसी के बारे में. इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज श्रीधर आचार्य फॉर्मूला. Yes, this is known as Sridhar Acharya method or Sridhar Acharya formula, because this was given by Sridhar Acharya, the mathematician. तो x का वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करना है इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपके पास क्या फॉर्मूला अवेलेबल है? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ओके, सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. तो आपको यहां से ए बी एंड सी का वैल्यू क्या करना है? एक्सट्रैक्ट करना है. इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, जो भी वैल्यू है वो वैल्यू आप यहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे, एंड देन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला. ओके, ऑलराइट, परफेक्ट. So let's move forward. Now, sum and product of roots. Sum of roots and product of roots. ये एक फॉर्मूला है जो आपको लिखना है, जो आपको याद रखना है, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए. तो इसका नाम क्या है? सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट. ये हमें बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. चलिए साइड में लिख लेते हैं. सम ऑफ रूट्स कैसे आएगा? शॉर्टकट तरीका है माइनस बी अपॉन ए. बी का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स. इट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए? इट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ए का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो दिस इज known as sum of roots. Second is product of roots. इक्वेशन से आपको क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है. सो सी अपॉन ए. सी का मतलब हो गया द कांस्टेंट टर्म, जो टर्म आपका कांस्टेंट है इक्वेशन के अंदर, डिवाइडेड बाय ए. ए का मतलब हो गया क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो
This is the formula for sum of roots and product of roots. Let's take one simple example. X square plus 5x plus 6 is equal to 0. ओके, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके आपको अगर पता लगाना है रूट्स का सम क्या है एंड रूट्स का प्रोडक्ट क्या है, तो व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली सम निकालने के लिए क्या करना है, माइनस बी अपॉन ए. व्हाट इज बी? बी इज 5 हियर एंड व्हाट इज ए? ए इज 1. तो माइनस 5 by 1, that is minus 5. This is sum of roots. And if you want to calculate the product of roots, अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, देन इट इज सी अपॉन ए. व्हाट इज सी? 6. ए इज 1. ऑलराइट, सो हिमांशु राठौर इज आस्किंग कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो इस वेरिएबल के आगे लगा है नंबर, दैट इज नोन एज कोफिशिएंट. इफ आई से 2x स्क्वायर, तो दिस 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जो x स्क्वायर के साथ में अटैच्ड है, सो इट इज नोन एज कोफिशिएंट. माइनस 3x, तो x के साथ में क्या एसोसिएटेड है, -3 एसोसिएटेड है, तो -3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x. प्लस 5, तो 5 इज द कांस्टेंट टर्म. 5 इज द कांस्टेंट टर्म. ऑलराइट, सो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे कैलकुलेट करना है, दिस यू अंडरस्टैंड. नाउ कभी कभार क्या होगा, क्वेश्चन आपको देगा कि दीज आर द सम एंड दीज आर द प्रोडक्ट. ये आपको सम भी दिया हुआ है, प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, एंड यू हैव टू फॉर्म द इक्वेशन. आपको इक्वेशन बनानी है. तो इक्वेशन को फॉर्म करने का तरीका क्या है, हाउ टू फॉर्म द इक्वेशन? इट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, देन पुट एक्स, plus product of roots, and then equal to 0. Equal to 0. If let's say I am saying the sum of roots is 10 and product of roots is 24, then form the equation. तो आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है. सो व्हाट यू विल डू, विल राइट एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है आपका 10, you will write 10x plus product. Product is how much? 24, and then equal to 0. So x square minus 10x plus 24 equal to 0. So this is your equation. So using sum and product, you can form the equation. And if equation is available, you can find the sum and product. Okay, so it is a vice versa. दोनों तरीके से आप चल सकते हैं. इक्वेशन गिवन है तो सम एंड प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं, सम एंड प्रोडक्ट गिवन है तो इक्वेशन बना सकते हैं. आई होप इट इज क्लियर टिल हियर. यहां तक का अंडरस्टैंडिंग बनना जरूरी है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं. ओके, सो लेट मी नो टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर. सब कुछ परफेक्ट है अभी तक? फिर हम आगे बढ़ते हैं. Okay, now if you want to solve this equation, this is known as quadratic equation. Now if you want to solve this quadratic equation, there are two methods to solve. There are two methods to solve. Okay, everybody says everything is clear. Perfect. Okay, so there are two methods. One is known as splitting method. फर्स्ट मेथड का नेम क्या है, स्प्लिटिंग मेथड. तो ये आपने लोअर क्लासेस में भी किया है, बट फिर भी हम यहाँ वापस से करेंगे. स्प्लिटिंग मेथड को कैसे यूज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0. नाउ सबसे पहले आपको लेना है a इंटू सी. a मल्टीप्लाई बाय c. व्हाट इज a? a इज 1 एंड c इज 24. So a into c is 24. Now इस 24 के आपको फैक्टर्स करने हैं. 24 के क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं. इस तरह से फैक्टर्स करना है जिससे उसका सम आ जाए कितना, 10. जिससे सम कितना मिलना चाहिए, 10. ओके, सो सारे पॉसिबल फैक्टर्स हम पहले लिखेंगे 24 के, लाइक 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 4, 3 इंटू सॉरी
8, देन 4 into 6, सारे पॉसिबल वैल्यूज आ गई। अब आपको देखना है सम 10 आप कैसे बना सकते हैं, इसको ऐड या लेस करके। ओके, तो आपको बेसिकली क्या बनाना है, -10, माइनस के साथ में, साइन के साथ में देखना है, यू रिक्वायर -10। अब -10 आप कैसे बना सकते हैं, ऐड करने से तो आना चाहिए -10, मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए 24। ओके, चलो फर्स्ट पॉसिबिलिटी 1 एंड 24 से तो नहीं है, एड या लेस करो, 10 बन सकता है क्या, नो। 2 एंड 12 एड या लेस करने से बन सकता है, इफ यू टेक +2 and -12, तो -10 तो आता है, but if you multiply them you will get -24, and here we are having +24, so this is also wrong। 3 and 8, 10 नहीं आ सकता। 4 and 6, yes 10 is possible, -4 and -6, ऐड किया आपने, it is -10, मल्टीप्लाई किया, you are getting +24, therefore it is correct। तो आप क्या लिखेंगे, x² -4x -6x +24 equal to 0। Now take x as common. What is left? X -4. Take 6 as common. Again x -4. So what you are left with? X -4 and x -6. Okay. So therefore, compare 1 by 1 with 0. So you are getting x equal to 4 and x equal to 6. So these are the two roots. These are known as values of x is known as roots of equation. x की वैल्यू को ही हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, roots of equation. All right? Understood everybody? This method is known as splitting method. Let's take one more example, and this time you have to try to solve in this manner. X square plus 7x plus 12 equal to 0. Now this time you have to try and find out the roots of the equation. Equation के roots आपको calculate करने हैं। तो first step क्या है? Write 1a into c, 1 into 12 is 12। 12 के आपको factors करने हैं। इस तरह से factors करना है कि sum कितना आ जाए, 7। तो 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4। तो कौन सा possibility है, 3 and 4। So x square plus 3x plus 4x plus 12 equal to 0. 3 into 4 is 12. So you can verify that also. Okay, verify हो गया. Now take x as common. What is left? X plus 3. Take 4 as common. Again x plus 3. So therefore, x plus 3 and x plus 4. Now compare them with 0. So x is equal to -3 and x is equal to -4. So these two are the roots of equation. ये दोनों equation के क्या है? Roots है. So in this way, you can solve the question of quadratic equation, and this method is known as splitting method. All right. Now the second method is known as the quadratic formula or Sridhar Acharya formula. Quadratic formula or Sridhar Acharya formula. Now in this what we have to do? Minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a. Now, if we solve the same question using this method, then how we will get the answer? Let's see. Mohammed Anas is asking, बड़ा number पहले ले या छोटा, it makes no difference. You can take any number. Okay? आप कोई भी number पहले लें बाद में लें, it doesn't make any kind of difference. चलिए, अब हम सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो पहले आप फटाफट से लिख लें व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो a is 1,
x का कोफिशिएंट क्या है +7, so b is 7. 12 is the constant, so c is 12. Okay, so now let's put the value. -7 plus minus root of b square minus 4a. A is 1, c is 12 upon 2a. So it is 2 into 1. All right. So -7 plus minus 49 minus 48 upon 2. So what is root of 1? Root of 1 is 1. So -7 plus minus 1 upon 2. Now you have to be very careful. It is plus as well as minus. That means you have to use one time plus and second time minus. तो एक बार आपको क्या करना है यहाँ पे एक बार पॉजिटिव साइन लेना है और दूसरी बार नेगेटिव साइन लेना है. So let's take -7 plus 1 by 2 and -7 minus 1 by 2. So what you are getting? -3 and -4. So yes, we are getting the same answer using this quadratic formula. Okay. So method चाहे कोई भी हो, answer will remain same. आंसर आपका सेम रहेगा. तो दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं. लेकिन पॉइंट तब आता है जब आपके फैक्टर्स प्रॉपरली डिविजिबल नहीं है. When your factors are not properly divisible, then you have to use only quadratic formula. There is no other option. तो उस केस में splitting method काम नहीं करेगा जब आपके factors properly नहीं हो सकते. That means आपका जो result है वो result आपका root में आएगा, decimal में, fraction में आ रहा है. That means you have to apply the quadratic formula. All right? Okay. Now let's understand the nature of roots. तो nature of roots क्या होता है कैसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी वैल्यू कैसी आएगी. Now see, if we talk about the quadratic formula, तो quadratic formula में एक रूट के अंदर एक वैल्यू थी. क्या वैल्यू थी? बी स्क्वायर माइनस 4ac. Only this portion is known as d. D means determinant. D in short में हम क्या बोलते हैं इसको? Discriminant. This is known as d. Discriminant. Okay. This portion b square minus 4ac बिना रूट के b square minus 4ac. This is known as discriminant. Now अगर इसका वैल्यू इक्वल टू 0 है, आपने इसको सॉल्व किया और इसका वैल्यू कितना आता है? 0. दैट मीन्स आपके रूट्स कैसे होंगे? हम रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं. रूट्स कैसे होंगे? दे विल बी रियल एंड इक्वल. they will be real and equal. तो फर्स्ट कंडीशन आपकी यही है. इफ b square minus 4ac is equal to 0, then roots will be real and equal. रियल मतलब रियल नंबर होगा, इमेजिनरी नहीं है. जो इमेजिनरी नहीं है वो सारे नंबर्स क्या होते हैं आपके? रियल नंबर. एंड सबसे खास बात क्या है यहाँ पे? दे आर इक्वल. रूट्स इक्वल होंगे. लाइक 4 and 4 दोनों वैल्यूज आपकी सेम आ गई, दोनों वैल्यूज 5 आ गई, दोनों वैल्यूज 10 आ गई. तो जब दोनों वैल्यूज आपकी सेम है तब ऐसा होता है. इफ आई टेक द सिंपल एग्जांपल हियर, कहाँ जगह? यहाँ जगह बनाते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9. अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, व्हाट यू आर गेटिंग? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9. take x as common, x plus 3, take 3 as common, x plus 3. So what you are getting? Both the brackets are same, x plus 3, x plus 3. So therefore value of x is -3 and -3. So both the values are equal. ऐसा क्यों हो रहा है? Because in this case, if you check, b square minus 4ac will be equal to 0. What is b here? b इस केस में कितना है आपका? b is 6, so 6 square minus 4 into 1
into 9. So 36 minus 36 is 0. So in this case, discriminant is 0. Therefore, roots are real and equal. Rajesh is asking pattern MCQ है? Yes, of course, MCQ ही pattern रहेगा आपका. Now, second case. If the value of b square minus 4ac is greater than 0. Greater than 0 का मतलब क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है. तो रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे, अनइक्वल होंगे. रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड अनइक्वल, दोनों की वैल्यू अलग अलग रहेगी. दैट मीन्स द वैल्यूज विल बी डिस्टिंक्ट, डिफरेंट वैल्यूज. जैसा आपने यहाँ पे किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24. सो इन दिस केस जो आपका सोल्यूशन है, दैट इज 4 and 6. यू आर गेटिंग टू डिफरेंट वैल्यूज, टू डिफरेंट वैल्यूज. थर्ड केस, if the value of b square minus 4ac is less than 0, that means the value is negative. इस बार वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है. तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स विल बी इमेजिनरी. तो आपके रूट्स इमेजिनरी होंगे. नाउ इमेजिनरी का मतलब क्या है? ये बहुत कॉमन डाउट रहता है. अंजलि ने भी यहाँ पे पूछा है, व्हाट इज एन इमेजिनरी नंबर? किसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर? तो जब हमारे पास रूट में कोई भी नेगेटिव वैल्यू आती है, दैट इज नोन एज इमेजिनरी नंबर. लाइक रूट ऑफ -2, दिस इज एन इमेजिनरी नंबर. इसको हम और कैसे लिखते हैं? √2. एंड जो -1 के अंदर रूट है, -1 रूट जो है, उसको हम क्या लिख देते हैं? आई. So it is denoted by I. So √2 I. I means imaginary number, or you can say iota. तो जब रूट में नेगेटिव वैल्यू है, दैट इज योर इमेजिनरी नंबर. तो ये आपका थर्ड कंडीशन हो गया. नेक्स्ट, फोर्थ कंडीशन. इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज अ परफेक्ट स्क्वायर. अगर आपने इसको सिंप्लीफाई किया एंड वैल्यू क्या है? इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो फिर आपके रूट्स कैसे होने वाले हैं? रियल भी होंगे, रैशनल भी होंगे एंड अनइक्वल, दैट मींस डिस्टिंक्ट भी रहेंगे. लेकिन कंडीशन एक ही है, इट मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. वो परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है. देन फिफ्थ केस, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac is greater than 0. 0 से तो ग्रेटर है, बट इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. 0 से ग्रेटर है, पॉजिटिव है, बट वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो रूट्स रियल तो होंगे, बट दे विल बी इरेशनल एंड अनइक्वल. Irrational and unequal. So these are the five cases in total, and out of these five cases, only there is one case in which the roots are imaginary. सिर्फ एक ही केस ऐसा है जहां पर रूट्स इमेजिनरी होंगे, और वो केस कौन सा है? जब रूट के अंदर की वैल्यू 0 से कम होती है. दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देन इट विल बी इमेजिनरी. अदरवाइज इन ऑल द फोर केसेस रूट्स आर रियल. इन चारों केसेस में रूट्स कैसे हैं? रियल है. तो रियल इज कॉमन इन ऑल अदर फोर्स. नाउ इफ वी टॉक अबाउट इक्वल, तो इक्वल कब होगा? व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. तो 0 के इक्वल, तो रूट्स भी इक्वल. अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो अनइक्वल. राइट? जैसे ग्रेटर देन 0 है, तो वो अनइक्वल. परफेक्ट स्क्वायर है तो रेशनल, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल. ओके, तो ये सारे बेसिक चीजें यहाँ पे रहती है. देन यस, अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहाँ ध्यान रखना है, इरेशनल रूट्स अकर इन कॉन्जुगेट पेयर. ये बहुत काम आएगा आगे क्वेश्चंस के अंदर. इरेशनल रूट्स जो है, ये ऑलवेज कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला मेरा एक रूट आ रहा है 2 प्लस √3, तो बाय डिफॉल्ट सेकेंड रूट क्या होने वाला है? 2 माइनस √3. ओके, तो क्वेश्चन आपको एक रूट दिया है, दूसरा रूट ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा
just by changing the sign. Okay. Similarly, if I say your one root is 5 minus root 2, what will be other root? Other root be 5 plus root 2. 5 plus root 2. All right. Perfect. सो दीज आर इरेशनल. इरेशनल मतलब जो रूट्स के अंदर आते हैं, जो रूट में वैल्यूज है उसको आप कह सकते हैं इरेशनल. एंड जो रूट में नहीं है वो सारे आपके रेशनल नंबर्स. तो ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्रॉम क्लास 6 to 10. बट फिर भी आपने यहाँ पे रिकॉल कर लिया. इरेशनल को आप समझ सकते हैं जो वैल्यूज आपके रूट के अंदर है, और इरेशनल जो आपके रूट में नहीं. फिर दूसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में पॉइंट जो आता है, इफ वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर. एक रूट दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, तो उस केस में प्रोडक्ट क्या होगा. द प्रोडक्ट इज ऑलवेज वन. उनका प्रोडक्ट ऑलवेज क्या रहेगा, वन. इफ सी अपॉन ए इज वन रूट, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, ए अपॉन सी. एंड इसलिए जो उनका प्रोडक्ट है दैट विल बी वन, बिकॉज सी एंड सी, ए एंड ए ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो यू विल गेट वन. इफ वन रूट इज 1/2, अगर इसका रेसिप्रोकल है दैट मीन्स टू, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट प्रोडक्ट एज 1. So always the product will be 1 if this is the condition. Now if one root is equal to other but with opposite sign, एक रूट दूसरे के जैसा है बट साइन ऑपोजिट है. एक 2 है तो दूसरा -2 है. एक 10 है तो सेकंड वाला -10 है. तो ऐसे केस में सम इज ऑलवेज इक्वल टू 0. उनका सम ऑलवेज क्या रहेगा, 0 रहेगा. ओके, अंडरस्टूड टिल हियर. ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 1, इस पैटर्न का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं अभी. चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या एग्जामिन करना है, द नेचर ऑफ रूट्स. यू हैव टू जस्ट एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स. कैसा है आपका नेचर ऑफ रूट्स. चलिए फर्स्ट पे आते हैं. नेचर ऑफ रूट्स करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या रिक्वायर्ड है, बी स्क्वायर माइनस 4ac. बाकी सबसे आपको कुछ भी नहीं करना है. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको सॉल्व करना है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, -8. व्हाट इज x, x is 1. And what is c, c is 16. Now if you simplify, what we are getting, 64 minus 64, that is 0. So b square minus 4ac is equal to 0. तो ये कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन. दैट मीन्स रूट्स विल बी रियल, रियल एंड इक्वल. रूट्स कैसे होने वाले हैं, रियल एंड इक्वल. ऑलराइट. Okay, so Divya has given the same answer. That's good. Second one, 3x square minus 8x plus 4 equal to 0. So b square, what is b? Minus 8 square plus, sorry, minus 4. A is 3, c is 4. So 64 minus 64. 64 minus 64. No, it is 48. 64 minus 48. So we are getting 16. So this time b square minus 4ac is greater than 0. This time it is greater than 0. If it is greater than 0, then you have to check whether it is a perfect square or not. So yes, it is a perfect square. It is a perfect square. So if these are perfect square, then the roots will be real, rational, and unequal. Yes. So this will be your result.
नेक्स्ट थर्ड वन, बी स्क्वायर माइनस 5x² minus 4x plus 2. Now this time, what is the value? Minus 4 square, then minus 4ac, 4 into 5 into 2. So what you are getting? 16 minus 40. That is negative 24. So value is less than 0. And whenever it is less than 0, roots are imaginary. Imaginary and unequal. Imaginary and unequal. Okay. And in the similar manner, you can solve the last one. So this pattern is done now. Let's move on the next pattern because the chapter is lengthy and time will be short. Okay. Now, illustration number one. If alpha and beta are the roots of this quadratic equation, then find the equation whose roots are alpha plus beta square and alpha minus beta square. तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कॉमनली आता है। थोड़ा सा आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग बनाने की जरूरत है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या समझना है? फाइंड द इक्वेशन। नाउ इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है, इसका बेसिक हमने अभी ऊपर लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस सम एंड देन प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द फॉर्म। अब आपको क्या करना है, आपका जो भी रूट है उसका सम निकालो, उसका प्रोडक्ट निकालो और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके, तो आपके दोनों रूट्स कौन से हैं, वो दो अनमोल रतन कौन से हैं? तो पहला अनमोल रतन तो है आपका रूट अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर एंड दूसरा रतन है आपका अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो ये दोनों आपके रूट्स हैं, इन दोनों का आपको सम निकालना है और इन दोनों का आपको प्रोडक्ट निकालना है और उस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। दिस इज द मेन टास्क। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सम की। सम कैलकुलेट कर लेते हैं। सम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड ऐड अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, दोनों को ऐड करना है। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा आप कैसे निकालेंगे? तो जो आपकी गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन है, इस इक्वेशन में क्या आप सम निकाल सकते हैं? सम आपको पता है क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो -7/1 दैट इज -7। ये आपका क्या निकल चुका है? सम, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। सम का मतलब क्या है? अल्फा प्लस बीटा। दिस इज अवेलेबल। एंड इफ यू रिक्वायर द प्रोडक्ट, अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए, मतलब अल्फा इंटू बीटा चाहिए, इट इज सी अपॉन ए, 12/1 दैट इज 12। तो दीज वैल्यूज आर अवेलेबल। अब इनमें से देखो कौन सा वैल्यू आपको काम आता है, लेट्स यूज देम। चलिए ये वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का हम यहाँ पुट कर देते हैं। नाउ अल्फा माइनस बीटा, अब माइनस बीटा तो होता नहीं है, तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला है जो हम लोगों ने बचपन में बहुत बार पढ़ा है, उसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये किसका फॉर्मूला है? अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का। तो यहाँ पर वो सारी आइडेंटिटीज जो क्लास 8, 9 एंड 10th में हम लोगों ने पढ़ी थी, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा रेलेवेंस रखती है। तो अगर किसी को पुराना कुछ भी याद नहीं है तो बेटर है कि आप एक बार थोड़ा सा उसको गो थ्रू कर ले, फॉर्मूलेस को, है ना? वो गो थ्रू किया हुआ होगा, देन इट विल बी बेटर फॉर यू। और अगर आप वहां से बुक से गो थ्रू नहीं कर सकते हैं, then of course you can connect on the application. I will help you in go throughing all those old concepts of class 9th and 10th. तो 9th and 10th की जो भी आइडेंटिटीज है वो हम एडिशनली और डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट, तो अभी के लिए आपको फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो बस यही चीज आपको अप्लाई करनी है इन दिस क्वेश्चन। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे? 7 स्क्वायर। ओके, तो चलिए पुट करते हैं यहाँ पे 7 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इज 12।
Let's simplify. 49 plus 49 minus 48. So what we are getting? 50. So 50 is the sum of root. 50 क्या है? सम ऑफ रूट. तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है? सिर्फ सम कैलकुलेट करना है और फिर प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है. ये क्वेश्चन उनको टफ लगेगा जिनको 9th और 10th में मैथ्स में इतना मजा नहीं आया, या आइडेंटिटीज पर हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, या उस मैथ को हमने थोड़ा इग्नोर किया. तो उनको थोड़ा जरूर ये टफ लग सकता है, बिकॉज दे आर नॉट इन अ हैबिट ऑफ डूइंग सच एल्जेब्रा. Okay, but do not worry, we will help you out, right? So let's find out the product. तो प्रोडक्ट के लिए आप क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर. तो यहाँ पे रखा आपने -7 का स्क्वायर, और अल्फा माइनस बीटा भी हमने जस्ट ऊपर निकाला ही था, ये वाला पोर्शन. So it is 49 minus 48. So what you are getting? 49. So 49 is your product. अब वैल्यू पुट कर दे. एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है आपका? 50. तो -50 प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज 49 इक्वल टू 0. So this is your answer. X square minus 50x plus 49 equal to 0. Okay. Now the second one. Alpha and beta are the roots of this equation. जब भी आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है, पहले आप क्या निकालेंगे? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द गिवन इक्वेशन. गिवन इक्वेशन का सम एंड प्रोडक्ट निकालेंगे. सो 2x स्क्वायर माइनस 4x minus 1 equal to 0. So what is the sum? That is alpha plus beta. It is minus b upon n. So minus of -4 upon 2. So what you are getting? 2. Then you require product alpha into beta. It is c upon a. So -1 upon 2. So this is the product. तो दोनों वैल्यूज आपके पास आ चुकी है, सम एज वेल एज प्रोडक्ट. ओके. नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है. ओके, लेट्स कैलकुलेट. सो अल्फा स्क्वायर अपॉन बी प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बी. तो आगे सिंप्लीफाई करने के लिए यू हैव टू टेक द एलसीएम. व्हाट विल बी द एलसीएम? अल्फा इनटू बीटा. सो वी आर गेटिंग अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. नाउ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ये भी हमें आना चाहिए. तो इसकी आइडेंटिटी आपको पास में लिखी मिलेगी. ओके, तो दिस इज अवर आइडेंटिटी. तो इसको अप्लाई करते हैं. अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा. नाउ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है. कितना वैल्यू अवेलेबल है? इट इज 2. तो 2 क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा का वैल्यू भी अवेलेबल है, -1/2. देन अगेन सम इज 2 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट. प्रोडक्ट इज -12. अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लें. 2 and 2 is cancelled, minus is cancelled. So what we are left with? We are left with 8. Then 3 into 2. No, 3 into 1 is 3. And then divided by -1/2. So therefore we are getting -22. So this is your result. So -22 becomes your final answer. All right. So in this way we can easily solve.
Now, next question again is a bit lengthy, but we have to try. और अगेन आगे जब आप एक्सरसाइज में जाएंगे यू कैन ट्राई दीज क्वेश्चन विद हेल्प ऑफ ऑप्शंस आल्सो. एक्स की जगह पे आप ऑप्शन रखो जो सेटिस्फाई करेगा, दैट विल बी योर आंसर. ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. 4x square minus 4 to the power x minus 3 into 2 to the power of x plus 2 plus 2 to the power of 5 equal to 0. This is your question. Now 4 can be written as 2 square. 4 को हम of course 2 square लिख सकते हैं. So you can write square minus now 3 into 2 to the power of x and 2 square. We can split them. इसको हम split कर सकते हैं. Now solve the powers. Powers को थोड़ा सा simplify कर लें. 4 square, 2 square is 4, 4 into 3 is 12. And 2 to the power of 5 is 32. Now for simplification, what we can do, let 2 to the power of x is equal to y. 2 to the power of x is equal to y. Now what you have to do, replace the value. Value को आपको थोड़ा सा replace करना है. So y square minus 12 into y plus 32 is equal to 0. All right. Now you can solve this by any method, whether you can try with quadratic formula or you can try with splitting method. But the same thing, let's split them. Y square minus 8y minus 4y plus 32 equal to 0. Y is common and here also 4 is common. So what is left? Y minus 8 and y minus 4. So therefore, value of y is 8 and y is 4. Now do not forget at last. Last में आपको forget नहीं करना है. Y का मतलब क्या है? 2 to the power of x. So 2 to the power of x is 2 cube. Therefore, x is equal to 3. And 2 to the power of x is 2 square. So therefore, x is equal to 2. So these are the final values of x. That is 2 and 3. तो 2 and 3 आपका फाइनल वैल्यू था. नाउ इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन मेथड. x की प्लेस पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं एंड चेक वेदर इट इज सेटिस्फाइंग और नॉट. ओके, ओके, दिव्या इज आस्किंग 12 into 2x कैसे आया. ठीक, 12 कैसे आएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर. 2 स्क्वायर कितना होता है? 4. So 3 into 4 gives this 12. Okay, understood Divya? Anu is saying the speed is fast. See, ये स्पीड अभी तो नॉर्मल है. स्पीड सिर्फ उनको फास्ट लगेगी जिन्होंने अलजेब्रा लोअर क्लासेस में नहीं किया है. और प्लस ये चैप्टर काफी लेंथी है एंड स्टिल वी आर ऑन दिस फर्स्ट एक्सरसाइज. अभी वी हैव टू कवर 3 or 4 एक्सरसाइजेस. ओके, तो स्पीड इज बिट स्लो, बट जिनको प्रैक्टिस नहीं है उनको जरूर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. ओके, चलिए क्वेश्चन 3 हो चुका है. 4 आप लोग ट्राई कर सकते हैं सिमिलर पैटर्न में करना है. 5 इसी पैटर्न से जो भी हमने किया है. 6 क्वेश्चन पे आते हैं. If one root of the equation is 2 minus root 3, then find the equation. आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है. तो अभी हमने पढ़ा था जब भी रूट्स इरेशनल है दे फॉर्म अ कॉन्जुगेट पेयर. फिर पेयरिंग बनती है. तो जब पेयरिंग बनती है तो आप क्या करेंगे? If one root is 2 minus root 3, other will be 2 plus root 3. दूसरी वैल्यू आ जाएगी 2 plus root 3. Alright.
Okay. So therefore, minus 2, 3, another number will be 2 plus 2, 3. What will the sum? If we want to calculate add something, what will be the product? 2 minus 2, 3 and 2 plus 2, 3. So it is 4 minus 3, that is 1. The product is 1. Sum is 4, product is 1. So final equation will be x squared minus 4 of x plus 1 equal to 0. Okay. Jay, I hope it is clear till here. Now, before moving on the exercise, let's take a break of 10 minutes and then we will be continuing. Okay.
ओके, चलिए, वेलकम बैक गाइस वंस अगेन। एंड लास्ट में आई थिंक वॉइस ब्रेक हो रही थी 1-2 मिनट्स में। लेट्स कंटिन्यू विद एग्जांपल नंबर 6 फर्स्ट, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो एग्जाम्पल नंबर 6 में बेसिकली क्या कहा है वो समझ लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग और उसको कैसे सॉल्व करना है। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2 माइनस रूट 3, ओके, फॉर्म द इक्वेशन गिवन द रूट्स आर इरेशनल। तो आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है एंड रूट्स कैसे हैं, इरेशनल है। नाउ वी हैव रेड दैट व्हेनेवर द रूट्स आर इरेशनल दे फॉर्म द कॉन्जुगेट पेयर्स। तो सेकंड रूट विल बी 2 plus root of 3. So this will be your second root. Now you have to find out the sum and product. Okay. Now sum क्या होगा? Root 3 is cancelled with root 3. Sum will be 4. Next is product. Now product is 2 minus root 3 and then 2 plus root of 3. It will be 4 minus 3, that is 1. So product is 1. Now you have to form the equation. So x square minus sum is 4, and then x plus product is 1 equal to 0. So this is your answer. This is your equation. So in this way, you can calculate your required equation. Okay. Fantastic. So let's move in the next question. Now, question number first is, if the roots of the equation are equal, then find out the value of m. Now, whenever the roots are equal, तो क्या condition होती है? B square minus 4AC is equal to 0, right? You can say that B square minus 4AC equal to 0. So compare करते हैं इसको, B square minus 4AC equal to 0. So let's simplify them. 64 plus 64, no, it is 8m cube equal to 0. So you can further simplify this. 8m cube is equal to minus 64. So cancel this. So you are getting m cube and then minus 2 cube. So whenever the power is same, base will be equal. So therefore, value of m will be minus 2. Value of m will be minus 2. Option number D is your answer. So this is the one way. Second way is you can put the option and check which one is satisfying. Only option D will satisfy the required equation. Okay. Now let's try third one, because second one pattern you have already done, that you have already covered. तो आपने कवर कर चुके हैं. So in this third one, what we have to do? 4 plus 1 upon 4 plus 1 upon again 4 plus 1 upon and so on. It is continuing up to infinite. ये पूरा infinite तक जा रहा है. तो सबसे पहला स्टेप है, this complete is equal to y. इस पूरे को हमने y मान लिया, x मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं. Let's take x also. इस पूरे को हमने x मान लिया. Okay, this is equal to x. Now अब अगर इसको फर्स्ट पार्ट को छोड़े, सेकेंड पार्ट को भी आप देखें, so it means the same. 4 plus 1 upon 4 plus 1 upon and it is extending up to infinite. तो ये पूरा infinite जा रहा है. तो इसी पोर्शन को हमने क्या माना, एक तरह से x. This portion is also x. So therefore we can write this as x equal to 4 plus 1 upon x. क्योंकि 1 के जो अपॉन में वैल्यू है वही चीज कंटिन्यूसली एक्सटेंड हो रही है अप टू इनफाइनाइट.
So you can write in this way. Now take the LCM and simplify. So x square is equal to 4x plus 1. So let's rearrange them. X square minus 4x minus 1 equal to 0. Now simplify this. तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे? टेक द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी, ओके, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac upon 2a, 2 into 1. So we are getting 4 plus minus root of 16 plus 4. So we are getting 4 plus minus root of 20 on 2. Now, 20 can be written as 2 root 5, right? So 4 plus minus 2 root 5 upon 2. Take 2 as common and cancel them. So what is your answer? 2 plus minus root 5. Option number C. So for question number 3, C is your answer. C becomes the answer. All right. So in this way, you can easily solve them. कई बार क्वेश्चन देख के हम घबरा जाते हैं कि इतना लेंदी क्वेश्चन होगा, कैसे सॉल्व होगा, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो जो क्वेश्चन इनफाइनाइट तक जा रहा है उसको सॉल्व करना तो और भी आसान है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वन, फोर्थ एक बार ट्राई कर लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। सो फॉर कैलकुलेटिंग दिस व्हाट यू रिक्वायर, इस गिवन इक्वेशन में से सम एंड प्रोडक्ट पहले कैलकुलेट करेंगे। व्हाट विल बी द सम ऑफ रूट्स? माइनस बी अपॉन ए, so minus of minus 4 upon 2, you are getting 2. And what will be the product? Alpha into beta, it is c upon a, so minus 3 upon 2. This is the product. Now we require the value of alpha square plus beta square. Now हमारे पास जो वैल्यू है उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यू हैव अल्फा प्लस बीटा, यू हैव अल्फा इनटू बीटा, तो इस फॉर्म में यू हैव टू कन्वर्ट। नाउ कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका क्या है? ऐड 2 अल्फा बीटा एंड सब्ट्रैक्ट 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा आपने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। ऐसा करने से बेनिफिट क्या होगा? दिस विल बिकम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम, सम कितना हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू minus 3 by 2. So let's cancel them. For we are getting 4 plus 3, that is 7. So your option number B is correct. So B option आपका आंसर आ जाएगा। All right. Now in the similar pattern you can try these. कुछ क्वेश्चन और लेते हैं from G exercise. Yes, G से एक बार ट्राई करते हैं। Now if you see the first question, a solution of quadratic equation a plus b minus 2 into x square, then second value and then third value is equal to 0. इस पूरे का सोल्यूशन आपको दे रखा है कितना? 0 दे रखा है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये आपको बताना है। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू, ट्राई एंड एरर मेथड, यूज द ऑप्शन मेथड।
कौन सा ऑप्शन आप पुट करें उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा। यू हैव टू पुट 1 और -1 2 और -2। ये पुट करने से अगर आपकी सारी वैल्यूज कट जाती है दैट विल बिकम योर आंसर। ओके, तो चलिए सोच के देखें क्या करना पड़ेगा। प्लस और माइनस, +1 और -1। इफ यू ऑब्जर्व, ए केयरफुली, तो ए के अंदर आपके पास क्या अवेलेबल है? ए, 2a एंड ए। ओके, ए, 2a एंड ए, सारे ए अभी क्या है? पॉजिटिव है। तो आपको क्या करना है? इफ यू हैव टू कैंसल देम, तो 2a मस्ट बी पॉजिटिव एंड अदर 2a मस्ट बी नेगेटिव। कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव होने चाहिए। दैट मींस हमें नेगेटिव साइन की जरूरत पड़ेगी। तो लेट्स एक्सपेरिमेंट विद -1 फर्स्ट। -1 के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो a प्लस बी -2c इंटू -1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a माइनस बी माइनस सी इंटू -1 प्लस सी प्लस a -2b इक्वल टू 0। So let's simplify. A plus b minus 2c, then -2a plus b plus c, then plus c plus a -2ab, सॉरी -2b। अब देखिए सब कुछ क्या कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो check with a -2a and a all are getting cancelled। b -2b all are getting cancelled। Then -2c, c, c, all these are getting cancelled, therefore the result is 0। option number b is your correct answer। Okay, b is your correct answer। perfect। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं यूजिंग ऑप्शन मेथड। ऑलराइट, okay, now Anjali is asking, could you please explain 12th question of exercise number F? Okay, let's explain। 12 says P is not equal to Q. These two are not equal। P square is given in the question। Q square is also given in the question। ये दोनों values आपको question ने दे रखी है। Now, the equation having the roots P by Q and Q by P is, तो आपको ऐसी इक्वेशन बनानी है जिनके रूट्स कौन से हैं? P by Q and Q by P। तो आपको क्या चाहिएगा? सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो लेट्स कैलकुलेट सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स कैसे निकालना है आपको? P by Q plus Q by P। Let's take the LCM। So P square plus Q square upon QP। Okay, now जब भी ऐसा सिचुएशन आता है P square plus Q square, you have to convert this into whole square। तो आपको इसको P square, अच्छा यहाँ पे डायरेक्टली आपको वैल्यू अवेलेबल है। यू कैन इवन डायरेक्टली पुट द वैल्यू ऑफ P square एंड Q square। दोनों का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। दोनों का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू? 5p - 3 प्लस 5q - 3। दीज आर द वैल्यूज। ये क्या हो गया आपके पास? सम ऑफ रूट्स। सिमिलरली आपके पास सेकेंड ऑप्शन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स P बाय Q, Q बाय P, दोनों का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना है? इक्वल टू 1। प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। ओके, तो सम ऑफ रूट्स अवेलेबल है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास अवेलेबल है। ओके, नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज अवेलेबल, दैट मींस
C upon A is equal to 1. C upon A is equal to 1, or you can say C is equal to A. C and A दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली क्या है? सेम. तो अब देख लो कौन सा ऐसा ऑप्शन जिसमें C एंड A दोनों की वैल्यू इक्वल आपको दिख रही है. ऑप्शन ए में नहीं है, इट इज रॉन्ग. बी 3 एंड -3, इट इज रॉन्ग. नाउ सी एंड डी. सी एंड डी में से कुछ आपका रिजल्ट हो सकता है, राइट. सी एंड डी में से आपका कुछ रिजल्ट हो सकता है. नाउ ये आपको पता है, वैल्यूज आपकी यहाँ आ चुकी है. तो फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सम. तो आपको नेगेटिव नंबर रिक्वायर्ड होगा. प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0. Therefore, your required result will be C here. 3x square minus 19x plus 3 is equal to 0. All right. Okay. तो यूजिंग द प्रोडक्ट आपने क्या किया? इसका पहले प्रोडक्ट निकाला. C अपॉन A का वैल्यू क्या आ रहा है? एग्जैक्टली सेम आ रहा है. तो यू हैव अप्लाइड दैट. ओके. Then next one, second, if the root of equation x square minus 8x plus m is equal to 0 exceeds the other by 4. So if one root exceeds other by 4, then find out the value of m. You have to calculate the value of m. See, one root, if you have taken one root as a, other root will be a plus 4. Other root will be a plus 4. Now, what is the product? Product का formula क्या होता है? Minus c upon a. So as per question, so no, it is plus c upon a. So as per question, it is m. M upon 1 is m. So according to roots, a into a plus 4 is equal to m. Now you can simplify and get your result. Okay. Sum आपके पास कितना है? If you try the sum is a and a plus 4. Your sum will be minus b upon a, that is 8. So 2a is equal to 4, a is equal to 2. Now put the value here, 2 and 2 plus 4. So you are getting how much? 12. So therefore your correct answer is 12. All right. So Rajesh is having difficulty. Yes, it is having, it will be difficult for you because you haven't done algebra as you have told earlier. आपने algebra पहले नहीं किया है, तो आपको पहले basics वाला algebra करना पड़ेगा. So I will help you out with it. Okay. Then try this question number 6. 6 एक को एक बार आप try करें using option method because this is the best way to solve. Tambeshwar is asking a and a plus 4 कैसे आया? Because the question is saying one root exceeds the other by 4. If we have taken one root as a, other will be automatically a plus 4. If one is taken as alpha, other will be alpha plus 4. If one is beta, other will be beta plus 4. Okay. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 एक बार सॉल्व करते हैं यूजिंग ऑप्शन मेथड. कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है? तो पहले आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 13x
plus 13 equal to 0. Now, either you can apply the option or you can try splitting method also. तो देखिए किससे आपका रिजल्ट आता है. It is 12. 18 minus 6 is 12. You can try splitting method also or you can do with option method. Splitting से करते हैं. You are getting x square minus x plus 13x and then solve. Okay. So 12 and then equal to 0. So take x is common. It is x minus 1. Take 12 as common, x minus 1. So x minus 12 and x minus 1 equal to 0. So in this way, you will get your answer. Okay. Anil is asking student cleaning. No, it is student clinic. All right. With is saying, मुझे भी basic सीखना. Yes, you can connect. So all those students who want to connect on the basics can message me on the app. So we will take separate session for the basics. Okay. Now try question number 8. 8 को try करें. So try question number 8 with options. चलो ऑप्शन मेथड से ट्राई करें. ओके, जो पिछला आपका क्वेश्चन था उसको मैं एक बार प्रॉपर्ली यहाँ पे रीराइट कर देता हूँ आपके लिए. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12x plus 12 is equal to 0. Okay. Now take x as common, you are getting x plus 1. Take 12 as common, you are getting x plus 1. So x plus 1 and x plus 12. Okay. So this is your answer. Yes, question number 8 का आंसर फटाफट बता दो. कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 8 का? Yes, some of you have given the answer. Option number C. C को आप पुट कर सकते हैं. Let's substitute option number C in the equation. 3 and the 2 by 3. चलिए पहले आप 3 पुट करके देखें. तो 3 into 3 square minus 17 into 3 plus 24 equal to 0. So what you are getting? 27 minus 51 plus 24. That means it is equal to 0. So 3 is able to satisfy. 3 आपका satisfy कर पा रहा है. Then 2 by 3. That means you have to write this 8 upon 3. So if you try with 8 upon 3, then also you are getting the answer. That means अगर आप दोनों से satisfy कर लेते हैं, it becomes your correct answer. All right. Okay. Now let's try some word problems based on the quadratic equations. चलिए टाइम थोड़ा सा कम रहेगा अभी हमारे पास, लेकिन हम एक्स्ट्रा टाइम में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेंगे. तो डू नॉट वरी फॉर दैट. लेकिन जितना हम कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा अच्छे से करें विद प्रॉपर अटेंशन. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 1. डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 12. क्या बोला है क्वेश्चन ने?
डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अगर एक नंबर आपका x है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? रूट ऑफ x। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? द डिफरेंस इज 12। So x minus root of x is 12. Then now you have to find out the number. अब आपको नंबर कैलकुलेट करना है। सो नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो वन ऑप्शन इज x कैन बी रिटन एज रूट एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ x minus 12 equal to 0. Now root x can be taken as y. Let's take root x as y. So y square minus y minus 12 equal to 0. Now you can split this 12. 12 को split करना है जिससे एडलेस करने से आपके पास क्या आ जाए? -1. तो 3 and 4 से आप ट्राई कर सकते हैं। So y square minus 4y minus 3y. No, it is plus 3y minus 12 is equal to 0. Now take y as common. And here also take 3 as common. So what we are getting? Y minus 4 and y plus 3. So what is the value of y? Y is root of x. So root x equal to 4 and root x equal to -3. Now question has already given that the result is a positive square root. So you have to take only positive number. Ignore -3, positive number is 4. So x is equal to 16. If root x is equal to 4, then x is equal to 16. Okay? तो ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे? Let's see. The option given are 16, 25, 50, and so on. Now, a number, take the number and its positive square root. So what is the square root of 16? It is 4. So 16 minus 4, the difference is 12. So this is getting verified from the question. So question से ही number आपका verify हो गया, तो option number 16 is correct. तो इस तरह से option से आप और fast questions को कर पाएंगे. Okay? Understood? चलिए next question की तरफ आते हैं. A piece of iron rod cost ₹60. क्या है? आयरन रॉड का जो पीस है इसका कॉस्ट ₹60 दिया है। इफ द रॉड वॉज 2 मीटर शॉर्टर, अगर रॉड थोड़ी छोटी होती, ईच मीटर कॉस्ट ₹1 मोर, तो पर मीटर कॉस्ट ₹1 ज्यादा होगी। द कॉस्ट वुड रिमेन, द टोटल कॉस्ट, जो ओवरऑल कॉस्ट है वो क्या रहती? अनचेंज्ड। नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रॉड? दिस यू हैव टू फाइंड आउट। ये आपको कैलकुलेट करना है कि रॉड का लेंथ क्या होगा, कितना होगा। ओके, चलिए पहले थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं? लेट्स टेक द लेंथ ऑफ रॉड बी x मीटर्स। लेट लेंथ ऑफ रॉड बी x मीटर्स। ओके, तो अगर आपको रेट पर मीटर निकालनी है तो आप कैसे निकालते हैं? तो ओवरऑल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना है आपका? ₹60। सो कॉस्ट पर मीटर, CPM, cost per meter. 60 is the total cost, x is the number of meters, 60 upon x. Now, if length is reduced by 2, so new length will be x minus 2. Okay, overall cost is same. Total cost is still ₹60. So what will be the cost per meter? Cost per meter will increase by 1. पहले था 60 upon x, now it will increase by 1. Okay, and इसके अकॉर्डिंग हमारी कॉस्ट कैसे निकलेगी? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय लेंथ,
तो कॉस्ट अपॉन लेंथ गिव्स कॉस्ट पर मीटर। तो दोनों तरीके से क्या आ रहा है आपके पास, कॉस्ट प्लस मीटर, कॉस्ट पर मीटर। तो दिस बिकम्स योर इक्वेशन। अब इस इक्वेशन करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है एंड यू विल गेट द आंसर। सो लेट्स सिंप्लीफाई। 60 अपॉन x minus 2, 60 upon x is equal to 1. Okay, now let's simplify. X into 60 gives 60x minus 60x plus 120 upon x into x minus 2 equal to 1. 60x is getting cancelled, so 120 is equal to x square minus 2x. Now you can simplify this बाय स्प्लिटिंग मेथड और बाय एनी अदर मेथड, किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्प्लिट कैसे करेंगे, 120 है, इसके पार्ट्स करने हैं, सम कितना आना चाहिए, -2। और स्प्लिटिंग से नहीं करना चाहें तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो लेट्स सिंप्लीफाई। एक्स स्क्वायर, देन व्हाट वी आर गेटिंग, -12x plus 10x minus 120 equal to 0। टेक x as कॉमन, x को आपने ले लिया कॉमन, सो व्हाट इज लेफ्ट, x minus 12 and x plus 10 equal to 0। So either x is 12 or x is minus 10. So can the length be negative? क्या length कभी negative हो सकती है क्या? No. So x cannot be negative. So correct value will be 12. So therefore the length of the rod is 12 meters. Rod का length कितना हो चुका है? 12 meters. Okay? Understood? Perfect. Now, the next one is divide 25 into two parts so that sum of their reciprocals is 1 by 6. 25 के two parts करने हैं so that sum of reciprocals is 1 by 6. तो 25 के parts कैसे करेंगे? If one part is x, other will be 25 minus x. Now, what you have to do, sum of reciprocal. So, reciprocal is 1 by x and 1 by 25 minus x. So, their sum is equal to 1 by 6. Okay, so this is the equation. Now, you can solve by taking LCM. Okay, तो इक्वेशन को आप इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। So next is exercise number H. Exercise number H. Anjali is saying explain one more time. See, in this question, what we have done, total sum आपके पास कितना है 25, इसके two parts करने हैं. If the first portion is x, second will be x minus 25. Okay, ताकि दोनों का sum कितना आ जाए 25. Now, according to question, we have to add. तो हमने addition किया है. किसका एडिशन करना है, एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल। x का रेसिप्रोकल 1 बाय x, देन सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल 1 बाय 25 माइनस x। इनका सम कितना है 1 अपॉन 6। नाउ इसको ऐड करें एंड यू विल गेट द आंसर फॉर x। ओके, सो लेट्स मूव ऑन एक्सरसाइज नंबर h। फर्स्ट, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन and the sum of their squares is 34, right? Then find the numbers। तो अब देखिए दोनों कंडीशन को फटाफट चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ए ऑप्शन, सम इज नॉट 8, इनकरेक्ट। बी सी एंड डी तीनों में सम 8 आ रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। नाउ सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 34। सेकंड में स्क्वायर का सम 16 plus 16 is 32, incorrect। 9 plus 25 it is 34, yes it is correct। And for D, 4 plus 36 is 40. It is also incorrect. So option number C is your answer.
ओके, तो ऑप्शन से आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे, इट इज वेरी मच इजी मेथड। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 एक बार सॉल्व कर लें। द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 3। दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना है? 3 है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स इज 89। देन फाइंड। चलिए फटाफट इसको भी सॉल्व कर लें। 7 स्क्वायर 49 प्लस 16 89 नहीं आता है। 5 स्क्वायर 25 प्लस 64 89 आता है। सो बी इज करेक्ट, रेस्ट ऑल इज रॉन्ग। ओके, नाउ थर्ड वन। 5 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव होल नंबर, किसी नंबर का 5 टाइम्स इज 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ नंबर। ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ नंबर, देन यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर। आपको नंबर का पता लगाना है कि वो नंबर कौन सा है। ओके, सो क्वेश्चन ने क्या बोला? एक तरफ क्वेश्चन ने बोला है 5 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, 5 टाइम्स एंड लेट द नंबर बी एक्स। सेकंड क्या बोला है? ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ नंबर, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ नंबर। नाउ इनका जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 3। नाउ पुट द वैल्यू एंड सिंप्लीफाई। सो फटाफट से वैल्यू पुट कर लें एंड चेक करें क्या आंसर आता है। फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज 3, सो 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3, what we are getting? 18 minus 15, that is 3. So right hand side and left hand side both are equal, the condition is satisfied, therefore option number A is correct. A is correct. All right, next the fourth one. The area of a rectangular field is 2000 square meters and their perimeter is 180. Form the equation and find the length and breadth. डायरेक्टली आप ऑप्शन से कर सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो किस ऑप्शन का एरिया 2000 आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन नो, सेकंड ऑप्शन 50 इंटू 40 गिव्स 2000। ऑल्सो चेक द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। So 2 into 50 plus 40 gives 180. So this condition is also verified. So therefore, option number B is the correct answer. B answer आपका correct. Sixth, divide 50 into two parts such that sum of their reciprocals is 1 by 12. Now you can try this using options also. Sum कितना होना चाहिए? 50 and reciprocal का sum होना चाहिए 1 by 12. ऐसे केस में always ऐसा ऑप्शन यूज करें जो इजी हो। Always try easy option first. तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इजी लग रहा है जिसमें 20 30 लास्ट में जीरो दिख रहा है? ऑफ कोर्स दैट ऑप्शन इज इजी। ऑलवेज ट्राई इजी ऑप्शन, उसके होने के चांसेस भी ज्यादा है। तो रेसिप्रोकल का सम 1/20 प्लस 1/30, ये कितना आना चाहिए? 1/12 आना चाहिए। लेट्स चेक, टेक द एलसीएम। कितना एलसीएम आएगा? 60। सो 3 प्लस 2 इज 5, 1/12। So therefore, option number D is the correct answer. Yes, Rani has given the answer, option number D. Seventh is again similar. Then let's try another one.
10th. The sides of equilateral triangle are shortened by 12, 13, and 14 units respectively, and a right angle triangle is formed. So पहले क्या था? पहले एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था आपके पास, जिसमें सारी साइड्स क्या थी? इक्वल, एक्स, एक्स एंड एक्स। एक्स, एक्स एंड देन एक्स, तीनों साइड्स इक्वल थी। अब हमने क्या किया? एक जगह से 12 माइनस किया, दूसरी प्लेस पे 13 माइनस किया, एंड फिर 14 माइनस किया। तो ऐसा करने से इट फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये क्या बन चुका है? राइट एंगल ट्राइंगल। एंड इसमें हाइपोटेन्यूज क्या होगा? दिस इज द लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट कौन सा होता है आपका? x-12। बेस एंड परपेंडिकुलर आप किसी को भी ले लें। नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, what is the Pythagoras theorem? It is hypotenuse square. So x minus 12 square is equal to x minus 13 square plus x minus 14 square. Now simplify this and get the value of x. So x का value ही क्या है आपका? Side of equilateral triangle. So in this way you can easily get the side. All right. So correct answer is option number A. Yes, Rani has given the correct answer. Option number A, 17 units. Now let's move on the cubic equations also. Cubic equations को आपको कैसे solve करना होता है? Again, hit and trial method is the best method. So on trial basis, putting if some value of x satisfies the equation, then we get the factor. तो सबसे पहला काम क्या करना है? आपको ट्राई करना है कि कौन सा वैल्यू करेक्ट है, और उसके बाद उस वैल्यू को इनपुट करना है। पुट करना, और पुट करके हम चेक करेंगे वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो लेट्स ट्राई विद ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन इज गिवन बाय द ट्रिपलेट। नाउ अब यहाँ देखें, ऐसा ऑप्शन ट्राई करें जो दो में कहीं ना कहीं अवेलेबल है। उससे आपको आइडिया लग जाएगा या तो दोनों में से एक सही होगा या फिर दोनों ही गलत होंगे। ट्राई दैट ऑप्शन। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे मुझे 1 दिख रहा है एंड 2 दिख रहा है। इजी मुझे 1 लग रहा है, तो आई विल ट्राई विद 1 फर्स्ट। वैसा आप किसी से भी ट्राई करें, इट मेक्स नो डिफरेंस, बट इंपॉर्टेंट इज कि हम टाइम कैसे सेव करेंगे। सो टाइम सेव करने के लिए पहले मैं 1 को यूज करना चाहता हूँ। लेट्स ट्राई विद 1। So 1 cube minus 6 into 1 square plus 11 into 1 minus 6. Now what we are getting? 1 minus 6 plus 11 minus 6. So 12 minus 12 gives 0. That means 1 is satisfying. 1 तो satisfy कर रहा है. So option number A या B में से ही कोई एक option correct है. अब चेक करने के लिए मुझे नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन ट्राई करना पड़ेगा। सो लेट्स ट्राई विद -1। -1 का क्यूब, -6 इंटू -1 स्क्वायर, एंड देन 11 इंटू -1 एंड -6। सो वी आर गेटिंग -1, -6, then -11 and -6. So this time we are not getting 0. 0 नहीं आ रहा है, so -1 is not satisfying. So this set is not correct. B option will be correct. So question number 1 का correct answer आ चुका है आपका B. All right. Okay. Then the next one. Next try करते हैं. The cubic equation has the roots. Now simplify this. Again try with 1. अगर 1 से satisfy हो जाता है, that means A या B में से कोई solution होगा.
x cube plus 2x square minus x minus 2 equal to 0. If you are substituting minus, sorry, 1 cube plus 2 into 1 square minus 1 minus 2. That means 3 minus 3 equal to 0. It is satisfying. So 1 is correct. Next, check with minus 1. No, minus 1 से check करने से कोई फायदा नहीं, because minus 1 भी दोनों places पे available है. 1 भी दोनों places पे available है. So either you can check with 2 or minus 2. Accordingly, you can confirm your answer. So we are checking with 2. 2 से check कर लेते हैं. 2 cube plus 2 into 2 square minus 2 and then minus 2 equal to 0. So 8 plus 8 minus 2 minus 2. So this is again not equal to 0. Therefore, A option is wrong and automatically B will be correct. Okay. Okay, so Rani Singh, I'm unable to open the application. Okay, you can try logging with your email ID. email ID से भी आप try कर सकते हैं login करना. And एक बार जो भी आपका login हो जाए, you can message me on that application. Okay, so I will see to it. Do not worry. Then the next one, x minus 4, x minus 5 are the factors of the left hand side of the equation. अब ये सारे फैक्टर्स हैं. अगर ये सारे फैक्टर्स हैं तो ये सब इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे. तो चेक ये कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. फर्स्ट वैल्यू ओनली x लिखा है, दैट मींस x विल बी 0. Second is x minus 4 equal to 0, so x will be 4. And in third, x will be minus 5. So these are the roots. Now you have to check ये तीनों values किसको satisfy करती हैं. क्लियरली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. आपका आंसर ऐसे ही आने वाला है. कैसे आ जाएगा? इफ यू ट्राई 0, कहीं पे भी आप 0 रखें, फर्स्ट ऑप्शन में 0 रखा, -2 बच जाएगा बिकॉज यहाँ x नहीं है. सी ऑप्शन में +12 बच जाएगा एंड डी ऑप्शन में -6 बचेगा. बट ऑप्शन नंबर बी में कुछ नहीं बचेगा. इट विल बी 0. तो देयरफॉर बी विल बी करेक्ट. तो कभी कभी ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं जो आपको अगर कैलकुलेटिवली पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को फास्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं. राइट, चलिए ये आपका क्वेश्चन हो चुका है. थर्ड वन. चलिए समरी एक बार देख लेते हैं पूरे टॉपिक की. अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है, कैसे डिस्कस किया है. तो इस पूरे चैप्टर में बेसिकली हमने इक्वेशन से स्टार्ट किया था, लीनियर इक्वेशन. एंड लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ax plus b is equal to 0. और इसमें a का वैल्यू a cannot be 0 बिकॉज अगर a 0 हो गया वेरिएबल हट जाएगा एंड इट विल नॉट बी एन इक्वेशन. फिर general form of linear equation in two variables. If there is two variable, the form is ax plus by plus c is equal to 0. And if there are two equations, we can solve them by elimination method, or by substitution method, or by cross multiplication method, or by option method. So there are four different methods available by which you can solve and get the value of x and y. चलिए ये तो था बात पहले लीनियर इक्वेशन का. लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा? व्हेन मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल इज 2, देन इट इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमने इक्वेशन को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधर आचार्य फॉर्मूला. तो दिस इज द फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac/2a. देन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट. सम कैसे कैलकुलेट होता है? सम इज सिंपली -b/a
and product is simply C upon A. एंड इक्वेशन फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0. देन हमने रूट्स पढ़े थे, कौन से रूट्स कब कब आते हैं. ओके, सो देर आर सम कॉमन डाउट्स. नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है एंड स्टूडेंट क्लिनिक पे ज्वाइन कैसे होते हैं. सी अनिल, आपको ऐप डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद यू विल बी एडेड इन द ग्रुप. तो जो भी आपका बैच का ग्रुप होगा उसके अंदर आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा. ओके, सो डू नॉट वरी. So Rajesh is asking about how do we calculate the negative markings. See, you have 100 questions. 100 questions में से आपने किए हैं अटेंड 80 questions and 20 questions are left. 20 आपने छोड़ दिए. 80 में से let's say 60 is correct. 60 आपने करेक्ट किए हैं एंड 20 क्या किए हैं, इनकरेक्ट किए हैं. तो आपको मार्क्स कैसे अलॉट होंगे. तो जो आपने 60 करेक्ट किए हैं यू विल गेट 1 मार्क्स फॉर दिस. सो यू आर हैविंग 60 मार्क्स. एंड जो आपने रॉन्ग किए हैं उसका आपको मिलेगा -0.25. तो मल्टीप्लाई बाय -0.25. तो 20 मल्टीप्लाई बाय -0.25 कितना होता है, इट इज 5. -5 आपका यहाँ पे हो चुका है. एंड व्हाट इज लेफ्ट, पीछे बचा है आपका 55 मार्क्स. तो जो क्वेश्चन आपने छोड़े उसका क्या करना है, उसका कुछ भी नहीं होगा. जो आपने अटेंड किए हैं करेक्ट वाले का 1 मार्क्स मिलेगा. जो रॉन्ग किए हैं उसका 0.25 आपका डिडक्ट हो जाएगा पर क्वेश्चन. सो इन दिस वे यू गेट योर मार्क्स. ऑलराइट राजेश, तो ये सिंपल तरीका है. इस वे से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं आपके मार्क्स कितने आने वाले हैं. ऑलराइट, ओके. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर जून एग्जाम. जून एग्जाम के लिए आज 1 जनवरी हो चुका है. तो आपको अपना टाइम टेबल पहले से ही प्रिपेयर कर लेना है. यू हैव टू फॉर्म द टाइम टेबल कि 1 जनवरी को ही आप अपना टाइम टेबल बना लें पूरे मंथ का. एटलीस्ट पूरे जनवरी में आपका क्या क्या टारगेट रहेगा, किस सब्जेक्ट में आप कितना कितना पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ तक आपका कवर अप हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपना पूरा स्केड्यूल प्रिपेयर कर लें. ओके, तो उससे क्या होगा, आपको एक माइंड में रहेगा कि मैंने इतना परसेंट ऑफ कोर्स कंप्लीट कर लिया है. एक कॉन्फिडेंस भी आपके आता है. तो 1 जन टू 31 मई, ये 5 महीने हैं. जून में आपका एग्जाम है. तो 5 मंथ्स आर अवेलेबल. और इस पूरे 5 मंथ्स में आपको कोशिश करके अपना कोर्स रिवाइज करना है एटलीस्ट 4 to 5 times. 4 to 5 times you have to revise the course. And yes, it is possible, easily possible है. और इतनी टाइम्स अगर आप रिवाइज करते हैं उसके बाद एग्जाम देने का जो आपका मजा है बहुत ज्यादा हो जाता है. बहुत अच्छे से आप एग्जाम दे पाएंगे. राइट. तो कैसे करना है वो हम क्लास में डिस्कस करते रहेंगे रेगुलरली. एंड इवनिंग के अंदर भी हम रात को जो डिस्कस करने वाले हैं आज उसमें भी हम पूरा डिस्कस करेंगे कि आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए. जो भी आपका स्केड्यूल है वो किस तरह से आप बनाएं. डेली आपको क्या करने हैं, सारे के सारे पेपर्स अटेंड करने हैं. डेली आपको मैथ्स तो करना ही करना है. मैथ्स के साथ में आपका कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा. मैथ्स हुआ, स्टैट्स हुआ, एलआर हुआ, इनमें से आपको रेगुलरली करना ही करना है. एक भी दिन इसको स्किप नहीं करें. सिमिलरली अकाउंट्स भी ऐसा ही है, आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है अकाउंट्स में भी. तो उसको भी आप बिल्कुल रेगुलर करेंगे. तो ये दोनों आपके मेनली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हो गए. इकोनॉमिक्स एंड लॉ. इकोनॉमिक्स में अगर आप डेली नहीं करते हैं, वीकली भी अगर आप 3 days निकाल पाते हैं, दैट इज सफिशिएंट, नो प्रॉब्लम. बिकॉज इकोनॉमिक्स आपके पास ज्यादा लेंदी नहीं है और सबसे अच्छी बात एमसीक्यू पैटर्न. लेकिन लॉ के अंदर आपको राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा करने की जरूरत है. तो इसमें भी आपको डेली तो पढ़ना ही पड़ेगा. डेली आपको कुछ क्वेश्चन हाथ से लिखने हैं, हाथ से सॉल्व करने हैं.
बिना किसी बुक को देखे, बिना किसी नोट्स को देखे, तो उससे आपको आइडिया लगेगा आपकी वोकैब्युलरी कैसी है, राइटिंग स्पीड कैसी है, और फिर अपने आंसर्स को आप मैच करें जो आपके वेरीफाइड आंसर्स होते हैं उसके साथ में, ताकि आपको एक फ्रैक्शन पता लगेगा कि आप कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं एंड किस तरह से आपके मार्क्स एनहांस हो सकते हैं। ओके, परफेक्ट। So Anil is asking, रात को भी lecture? No Anil, आई एम सेइंग दैट मैं इंडिविजुअली जो आपको स्टूडेंट्स के लिए कैप्चर किया है, तो वहां पे हम लोग डाउट्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। और आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि आपका जो रेजोल्यूशन आप लोगों ने बनाया होगा उसको हम कैसे अचीव इन बेस्ट पॉसिबल मैनर, और कैसे हम इस ईयर को पूरा सक्सेसफुल बना सकते हैं, कैसे हम एग्जाम को एक बार में अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, परफेक्ट। सो आई थिंक टाइम इज ओवर नाउ। तो आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं एंड फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड सी यू सून।